Okay, so what is the work of method that we have to start? It contains a set of instruction which is used to execute special type of task, and it is used for unique purpose. A set of instruction which is used to do a specific task is called as a method, and every method is used for unique purpose. Then how you have to define a method? माने प्रत्येक काम को आमे जेतरा देखिबा जेमति हमर मोबाइल ले ब्लूटूथ ऑप्शन अछि, वाईफाई ऑप्शन अछि. So the Bluetooth and Wi-Fi option, it is used for specific purpose. For a specific purpose that we have to use. Okay. So the method, how you have to define? For defining a method, first of all, we have to define the access specifier, return type, then function name. Access specifier, return type, then function name, then it contains parameter. Sorry, first I have defined only function, parenthesis. When I am define kariba kono, first access specifier, then return type, then we have to define function name. It is a first way. Second way for defining a function is what? Access specifier, return type, function name, parameter. So what is the work of parameter? It is used to take input from user. It is used to take input from user. It works as bridge between function and calling code. Okay, like you can take an example. जदि हमें देखिबा गोटे ग्राइंडर रो कप गोटे नौचे, से कप रे हमें डिफरेंट जिंस ग्राइंडिंग कर परिबा. तादर हमें रसुन पकई परिबा, बिरी बाटी परिबा. So that बिरी रसुन एटा को कहबा कोन, that is a value. आ जोटी से रहउची जो कप रे रहउची सेटा हमर रहला parameter. So parameter is used to take the input from the user, and it is used to access, or it is used to give the data to the function and retrieve the data from function. Function को data provide करिवो, function नो data टाको आनिवो. सेटा calling code और function भितर गोटे bridge रूपे काम करे. Third way होची कोन,
हमें विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर रे फंक्शन डिफाइन करियो okay so I define here without access specifier means only return type then function name return type then function name fourth one is what it access specifier रहइबनी fourth one हमें define करिवा return type function name then parameter so it is the four way for defining a function the function the set of instruction which is used to do the specific task is called as the function and every function is used for unique purpose like in your program you are using bluetooth you are using wi-fi so every option is used for unique purposes this function is defined in the four way one is access specifier return type then function name next is access specifier return type function name with parameter then without access specifier then function name return type function name and then parameter the next हमें define करूचे the first option होची public void function name is display second public टा होची access specifier what is that we discussed in the inheritance chapter display suppose जोटे integer variable में int ये नहीं परिबे parameter हमें आर गोटे ऑप्शन एटा गोटे फर्स्ट ऑप्शन एटा नउचे आर गोटे सेकंड ऑप्शन में नउचे public void display string या character हमें नहीं परी parameter the similar way third रे हमें नहीं परिबा only void fourth रे हमें नहीं परिबा void display int ये भी नहीं करियो sorry network के डाउन रहला okay so it is the way of defining a function next is how we have to use programmatical suppose in class I define here demo okay, then in class I define some member variable inta the variable that is defined inside a class is called as the member variable it is called as the member variable then we define a function void show function acha then a function is used to breaking the program into smaller part तो सब प्रोग्राम टा को से कौन करिवो छोटो छोटो पार्ट रे से कन्वर्ट करिवो so that we are using the function now you have to when you break the program into a smaller part then you have to call it the function को हमको कॉल करिया पड़िवो प्रोग्राम टा ब्रेक हला किंतु कोडी कॉल हबो सब जगह मेन मेथड रे कॉल हबो मेन मेथड रे ताको कनेक्टेड करिया पड़िवो मेन मेथड रे कनेक्टेड करिया हेले प्रथमे हमें कोन करिवा क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा demo I equals to new demo so means
प्रथमे मते कोन करिया पड़िबो क्लास रो ऑब्जेक्ट बनिया पड़िबो सो हाउ टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास how to create object of class रो ऑब्जेक्ट हमें केमती बनेबा ऑब्जेक्ट मींस इट इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ क्लास माने मु तुमको जदी इनविटेशन बा मो घर को कोनसी पार्टी अछि मु तुमको डाकियो चाहूची सो दैट I give here like the name and family that means गोटे फैमिली रे जदी 5 जन मेंबर अछि मो 5 जन इंडिविजुअल लोकन को मु निमंत्रण कार्ड पठेबेनी मु जन को निमंत्रण कार्ड लिखिबे आ दैट जगह रे मु लिखि देबी एंड फैमिली सो दैट समस्त कोन होई जिवे ना आसी जिवे तो सेमते क्लास रो मेंबर्स मानो को कॉल करिबा कहले मेंबर्स माने जो वेरिएबल ऑफ फंक्शन हमें क्लास भीतर डिफाइन करिबा दैट इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ क्लास एटा ला वेरिएबल एटा मेंबर हे परिबो सो फंक्शन भी मेंबर हे परिबो तो क्लास रो मेंबर्स मानो को कॉल करिबा कहले प्रथमे मते क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाया पड़िबो so that means class name and object name equals to new class माने new keyword लिखाबो new class name then हमें define करिबा parenthesis और bracket define करिबा class name object name new class name then parenthesis हमें define करिबा बा bracket हमें define करू तापर कोन हबो से ऑब्जेक्ट थ्रू रे जो ऑब्जेक्ट हमें बनेबा से ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें मेंबर्स माने को कॉल करिबा सपोज मोर क्लास नेम हैला डेमो एटी डिफाइन करछि ऑब्जेक्ट नेम हैला आई ए जो नेम ता हमर डिफाइन करा हला ए नेम थ्रू रे हमें जे कोनोसी ना देई परिबा जे कोनोसी नेम हमें देई परिबा ए ऑब्जेक्ट नेम रे ओके तो ए आई जे के हमें जहां भी नेम चाहिबा एठी देई परिबा न्यू डेमो एटी ऑब्जेक्ट बना हला आ ए जो ऑब्जेक्ट थ्रू रे आई डॉट डॉट मींस एक्सेस ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु फंक्शन को कॉल करिबा आई डॉट शो डॉट मींस एक्सेस माने ऑब्जेक्ट हमें एठी बनेले बा निमंत्रण कार्ड बना हला कहा पई मैरिज पई सेही ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु कॉल करिबी कहा को कॉल करिबी ना मेंबर्स माने जो अछंती एठी शो अछि तो शो फंक्शन को एठी कॉल कर सपोज आ गोटे फंक्शन मु एठी डिफाइन करूची एठी void शो रहला सपोज मैं एठी डिस्प्ले डिफाइन कली void display function तो डिस्प्ले फंक्शन हेले सेमते मु कॉल करिवि कोन i डॉट डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन हैला जदि मु एठी किछि पैरामीटर नउची सपोज मैं एठी डिफाइन कली int a एठी डिफाइन कली तो एठी भी एठी जेतु इंटीजर अछि मते पास करिया पड़ियो 30 तो 30 वैल्यू टा जाय कि एठी a रे स्टोर हो ए 30 जाय कि a रे स्टोर हो i डॉट डिस्प्ले मु फंक्शन टा कॉल कली जेतु एठी इंटीजर अछि 30 स्टोर हो अच्छा मु जदि आ गोटे एठी इंटीजर जगह रे जदि मु एठी स्ट्रिंग डिफाइन करिवि सपोज आ गोटे फंक्शन मु डिफाइन कली void display 1 एठी 1 देली एठी जदि मु स्ट्रिंग डिफाइन करछ जे पैरामीटर जदि मु एठी स्ट्रिंग डिफाइन करूची तर ए जो फंक्शन जेतले कॉल करा हबो ए जो डिस्प्ले 1 टा में कॉल करिवा ए जगह रे मु कोन करिवि ना किछि नेम पास करिवि सपोज अशोक दे ये अशोक टा जेंके एठी स्टोर हैला okay so these are the what like benefit माने हमें ए बेनिफिट थ्रू रे हमें को एक्सेस करि परियो बा थ्रू रे ए जो ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें फंक्शन कॉल करले जदि इंटीजर अछि न्यूमेरिक वैल्यू अछि मैं डायरेक्टली पास करले और जो डिस्प्ले अछि तबे डायरेक्टली ए स्ट्रिंग वैल्यू एठी पास कर बुझेला एनी डाउट टिल now I show you this thing as a programmatically
we define it programmatically. So how you have to call a function. Network issue होचे जी. Class demo method. So I'm creating a class here. Class demo method int then void show function. Class demo method int void show function. Okay, so another the function we define function with parameter. Eta को parameter bracket भितर हमें value टा pass कर दे. हमें जितना function को call करिवा से जितना call करिवा हमें एठी value pass करिवा. एटा होची normal function. एटा होची function with parameter. तो ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ନା ପ୍ରଥମେ ଏ ଯୋଉ ଡେମो ମେଥଡ ଯୋଉ ଅଛି ଡେମो ମେଥଡ i equals to new demo method ମାନେ ଡେମो ମେଥଡ କ୍ଲାସ ରେ ଏଠି ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇଲି ଡେମो ମେଥଡ i is equals to new demo method କ୍ଲାସ ରେ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ ବନାଲା अच्छा एटा होची मेंबर वेरिएबल जो वेरिएबल टा क्लास रे डिफाइन करा जाउची ताको कहजो मेंबर वेरिएबल i डॉट a डॉट मींस एक्सेस वो वैल्यू मु पास करली 20 पास करली i डॉट a 20 तो ये 20 टा ए रे मु 20 टा को मु स्टोर करली तापर मु डिफाइन करली कोन i डॉट शो फंक्शन मु कॉल करली फंक्शन को शो फंक्शन को जेताले पास करूची एटा हमर शो करिवो दिस इज मेंबर फंक्शन this is member function I dot show this is member function ए फंक्शन टा कॉल आला तापर मु एठी कोन करली ना मु डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करली I dot display function जेतरे मु डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूची ए वैल्यू टा कोन हला 50 टा जाके b रे स्टोर हला जेतो एठी इंटीजर वैल्यू अछि मु फंक्शन टा को कॉल करली ए वैल्यू टा जाके 50 रे स्टोर हला तो 50 टा जाके आसी के x रे स्टोर हला तापर देखला this is parameterized function value is 50 इट शो कला तापरे एठी हमर जो भी मेंबर वेरिएबल वैल्यू टा में स्टोर कर जे सेला देखेबो दिस इज मेंबर वेरिएबल वैल्यू i डॉट a माने ए वेरिएबल वैल्यू टा शो कर प्रथम तो मु कोन करली देखो ना एठी क्लास बनै छै क्लास रा ऑब्जेक्ट डिफाइन करली ऑब्जेक्ट थ्रू रे मेंबर वेरिएबल i डॉट a मेंबर वेरिएबल को कॉल करली एठी 20 स्टोर करली तापर मु एठी शो फंक्शन को कॉल करली i डॉट शो को जेताबे कॉल करछि देखेबो दिस इज मेंबर फंक्शन तापर मु कोन करली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करली डिस्प्ले फंक्शन ने मु जेतले कॉल करूची एटा 50 टा को स्टोर करची b रे जाके x रे स्टोर हला तापर देखा दिस इज पैरामीटराइज्ड फंक्शन वैल्यू इज 50 एबे देखिबा हमें रन करके प्रोग्राम देखिबा
take some time okay जेटा execute हो actually एटा हमको देखिबो कोन ना जेताले मु क्लास रो ऑब्जेक्ट बनो इठी ऑब्जेक्ट बनाला I डॉट ए माने ऑब्जेक्ट हला I एई जो I जगह तमे जे कोनसी नेम देई परिबो I डॉट डॉट मीन्स एक्सेस मु काहा को एक्सेस करली मेंबर वेरिएबल टा को एक्सेस करली तो ए जगह मु केते स्टोर करली ना 20 स्टोर करली तापर I डॉट शो मु काहा को कॉल करली ना शो फंक्शन को कॉल करली एटा देखिबो दिस इज मेंबर फंक्शन तापर मु काहा को कॉल करली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करली I डॉट डिस्प्ले तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करछि 50 टा स्टोर हला बी रे बी रो आसे कोडी स्टोर हला x रे री बोते देखिबो दिस इज ए पैरामीटराइज फंक्शन वैल्यू इज जो वैल्यू मु पास करली 50 50 देखिबो एटी मेंबर वेरिएबल लो वैल्यू देखेला 20 टाइम नउछि so let it work okay ए प्रोग्राम ने कार किछि डाउट अछि पजरी पर मतलब मु आगु जीबी so now I move to next method that is called as the constructor next concept is constructor is a special type of method which is used to initialize the member variable. So constructor is a special type of method which is used to initialize the member variable constructor name and class name is always same. Constructor is a special type of method which is used for initializing the member variable. Constructor name and class name is always same. Then why we're using constructor? It is used to initialize the member variable. Member variable आमे कहा कहवा जो variable टा आमे class रे define करूचे ताको आमे कहवा member variable. Suppose class xyz xyz भितर में गोटे variable define करूचे int a तो ए जो int a आमे define करूचे आपको initialization करिया पे हमें constructor use करियो. Constructor name and class name is always same. That means class name है xyz constructor name टा भी होगा हमारा xyz इधर constructor constructor name and class name is always same. Constructor name and class name is always same. For initializing the member variable we are using constructor. So a is equals to so there may be more than one constructor in a program. गोटे program रे हमें एक रो अधिक constructor use करी परिवा तो से जगह को कुआ जीवो overload constructor. गोटे जिंस एक रो अधिक रहले तो कुआ जीवो over हमें over हे गला खाद्य जति के हम दरकार हमें ताटो जति अधिक खाइबा हम कहबा over खाइ देले overload. So overload constructor is what? If the constructor is present
more than one time, then it is called overload constructor. Okay, so it is called the overload constructor. If the constructor is present more than one time, then it is called as the overload constructor. And when the constructor is called, then ଆମେ function टाକୁ call କରୁଛେ class ର object बनेकी, ତାହେଲେ method ଟା କେମିତି call ହବ, ମାନେ constructor କେମିତି call ହବ? The constructor is called at the time of class object is created. हमें class ର object बनेଇବା ସେତେବେଳେ ଆମର constructor ଟା call ହବ. So when the constructor is called at the time of class object is created. The constructor is called at the time of class object is created. तो এই जोटा रहला आर मेन मेथड भितरे हमें यूज कले कोन xyz I is equals to new xyz. तो जेतेबेले मु क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौची से समय रे मोर कोन हला ना कंस्ट्रक्टर टा एठी कॉल हला. So at the time of class object is created, then the constructor is called. माने ई क्लास ऑब्जेक्ट बनाला, ई कंस्ट्रक्टर कॉल हला. कंस्ट्रक्टर जेतेबेले कॉल हबो मेंबर वेरिएबल टा इनिशियलाइजेशन हबो. Okay. So now ଏବେ ଆମେ प्रोग्राम देखिबा. How the constructor is actually working. The notes टा आज्ञा ये स्लो हो जे प्रोग्राम देखिया पे
ये प्रोग्राम टा मुझे मॉडिफाई कर दोची एठी हमें एमती डिफाइन करिवा उस क्लास constr एटा गोटे कंस्ट्रक्टर हैला एठी मु डिफाइन कली int a constr कंस्ट्रक्टर एठी डिफाइन करा हैला आ जगह रे मु डिफाइन कली a is equals to 5 एठी डिफाइन कली तो एठी आ गोटे कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करि परिबा constr तो एठी मु डिफाइन कली कोन int x डिफाइन कली एटा ओवरलोड कंस्ट्रक्टर हम कहि परिबा तापर ए जगह रे मु कोन करिवि a is equals to x माने एठी मेंबर वेरिएबल रहिला मेंबर वेरिएबल टा इनिशियलाइजेशन हला ए जगह रे a is equals to 5 एटा हला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर a is equals to 5 डिफाइन कली तापर मु मेन मेथड रे कोन करिवि मेन मेथड पूरा लिखि दउछि ए प्रोग्राम टा सुविधा public take void main string args now we are creating a object of class the class right object banele equals to new here डिफाइन करा हला जेतरे डिफाइन करा हला ताले एटा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली माने ए कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो एठी हमरा शो करिवो system dot out dot println ये शो करिवो this is default constructor this is default constructor value is a this is default constructor value is a एठी हमर कोन आसीबो ए हम डिफाइन करि परिबा this is parameterized constructor this is parameterized constructor value is a तो फर्स्ट हमें क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले तापर जेतर हम नेक्स्ट क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाउछि कंस्ट्रक्टर j इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर वैल्यू ही गला एठी 50 तो 50 टा हमर एठी स्टोर हैला x रे तो x रो आसी के a रे स्टोर हैला तापर लिखाला दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज 50 ये 50 टा जेतला हमें क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाउछे ताले से ऑटोमेटिक कोन करिवो ना खोजिवो जे कहा पाखरे पैरामीटर अछि कारण हम एठी वैल्यू दोछे तो ये 50 टा जगह एठी स्टोर हो x रो आसी के ओवर स्टोर हो तापर हम देखियो दिस इज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर 50 okay so this is a way of calling the constructor and parameterized constructor the constructor actually it is a special type of method which is used for initializing the member variable constructor name and class name is always same the constructor name and class name is always same and so the constructor name and class name is always same okay so these are the features of constructor that we are cover okay so in next class I will discuss about how to what is the use of this keyword okay so if you have any kind of doubt you can message me again I will discuss this part okay or else I start with the next part in tomorrow at the same time and